Recording is cancelled. You are live now. Good morning, everyone. I'm Madhur Srivastav, Company Secretary of the company, and on behalf of the company, I welcome all the members for the 4th Annual General Meeting of your company. The meeting is being held through video conference in compliance with Companies Act 2013 and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs. The company has engaged the services of Central Depository Services India Limited, CDSL, to provide remote e-voting facility and e-voting facility during the AGM. As stated in the notice convening this 4th AGM, since this AGM is being held virtually, the facility for appointment of proxies by the members is not available. Members attending this 4th AGM through audio-visual means shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. Those members who have not cast their votes yet electronically have an opportunity to cast their votes during the meeting through the e-voting system. The e-voting facility will continue to be available for 30 minutes after the meeting commences. For the smooth conduct of the proceedings, all the members will be in mute mode. The company has received requests from few members to register them as speakers at the meeting. Accordingly, audio and video facility will be enabled for those members when the quorum is open for question and answer session. The register of directors and key managerial personnel, the register of loans, guarantees, security and acquisition, and the register of contracts or arrangements have been made available on the website for inspection of members. The proceedings of this annual general meeting will be recorded and the transcript of the same will be made available on the website of the company. We have from Corporate Office, Mr. K. Madhu, Managing Director, Mr. Ashwin Datla, Director, Mr. K. Reddy, Director, Mr. D. Sarsuram, CFO, myself, Madhur Srivastav, Company Secretary, Mrs. B. Nirmala, General Manager Finance. We also have Mr. Bimal V. Goradia, Executive Director, attending through video conference. We have invitees from Corporate Office, Mr. Bhanu Prakash, Partner of Mrs. Bhanu Murli and Company, Statutory Auditors, Mr. D. Balram Krishna, Scrutinizer. As the company has no regular chairman, I request the board members to elect chairman for this 4th Annual General Meeting. I propose Mr. Ashwin Datla as chairman. I second the proposal. Mr. Ashwin Datla was unanimously elected as chairman. Now I request the chairman to address the members. Over to you, sir. Thank you. Thank you all and welcome to the company's 4th Annual General Body Meeting. My name is Ashwin Datla, elected as the chairman for this meeting. Madhur, we have quorum for this meeting? Yes, sir. We have about 38 participants. We have 38. Now that the required quorum is available, I call this meeting to order. Dear shareholders, a very good morning to all of you, and I extend a very warm welcome to the shareholders, my colleagues on the board, and other invitees to the 4th AGM of the company. The annual report for the year ended 31st March 2001, along with the AGM notice, director's report, and the audited annual accounts of the company have already been circulated. I would like to convey our wishes to you and your families in this challenging situation on account of the COVID pandemic. The performance and future outlook of the company. As you are all aware, NCL Holding was incorporated to take over the non-building material subsidiaries of NCL Buildtech Limited. During the year, the company has initiated several steps to restructure the operations and improve the financials of the company and its subsidiaries. The revenue for the financial year 2021 stood at 4.72 crores against prior year 6.66 crores. The reduction in the current year's revenue was mainly due to other income from sale of NCL industry shares, where we sold more shares last year compared to this year. In the current year, the company's focus is on implementation of the power project and consolidation and streamlining the operations of the subsidiaries. I'll kind of walk you through the operations of the individual subsidiary companies. Suncrop Sciences Private Limited. I'm happy to inform you that necessary steps have been taken to arrest the losses and make the unit cash flow positive from this year onwards. To provide a path for continued growth, additional investments are required. In an attempt to provide the necessary impetus for growth, we have initiated the process of identifying potential investors and partners who can help us in this process. The second company is Kakatiya Industries Private Limited.
the hydro division of KIPL. The construction of the 9-megawatt hydro project at Sambalpur, Orissa, was delayed owing to manpower shortages due to COVID and other small technical issues. I'm happy to inform you that the project is expected to be completed by the end of January 22. That's about a month from now. The company has taken the necessary approvals from the Orissa government for timeline extension. The project is expected to yield revenues from February 22 onwards. The chemical division of KIPL, the board of KIPL has approved the revised scheme of demerger to divest the chemical division. The company is waiting for the in-principle approvals from the banks and creditors to take this forward. Eastern Ghats Renewable Energy. This company was originally incorporated with the purpose of setting up hydropower businesses. However, with the investment into KIPL with an active hydropower project, the company does not plan to undertake any activities in this unit. Management is proposing to merge this unit with NCL Holdings, the parent company. NCL Green Habitats Private Limited. This company has land parcels in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Telangana. In order for better coordination and supervision of our assets, along with potential for better returns, the company is in the process of selling lands in Tamil Nadu and Andhra Pradesh and consolidating its presence in and around Hyderabad. The lands at Hosur, Tamil Nadu, the works related to the development of this land, primarily plotting, internal roads, compound wall, etc., have been completed. The company has entered into an agreement for sale for the entire property and has received an advance of 16.36 crores. The consideration of this sale is expected to reflect in our books in the financial years 21-22 and 22-23. Our lands in Andhra Pradesh. The real estate market in Andhra Pradesh has been slow and does not show signs of improvement in the near future. The company plans to exit these holdings and consolidate its holdings in and around Hyderabad. The lands in Hyderabad, the company has entered into a development agreement for the construction of flats. The construction activity will commence after obtaining necessary approvals, including RERA approvals. Sales are expected to commence from financial year 23-24 onwards. The efforts that are being put into the reorganization of the company and its subsidiaries are expected to reap the benefits from next financial year onwards. I would like to thank you. I'd like to take this opportunity to thank the shareholders and our business partners and look forward to their continued support in the company's future endeavors. Thank you. As the notice is already circulated to all the members, I take the notice convening the meeting as read. The audit report submitted by Banu Murli and Company, the statutory auditors for the financial year 2021, is already with you and is being taken as read. We now take up the resolutions as set forth in the notice. I request the company secretary to read out the resolutions proposed at this AGM. Thank you, sir. In terms of the notice of the 4th annual general meeting, the items of the ordinary business which are to be considered at this meeting are: first, to receive, consider and adopt the standalone audited financial statements of the company for the financial year ended 31st March 2021, together with the reports of the directors and the auditors thereon, and the audited consolidated financial statements of the company for the financial year ended 31st March 2021, together with the report of the auditors thereon. Second, to approve the final equity dividend of ₹1 per share for the financial year 2020-21. Third, to appoint a director in place of Mr. Ashwin Datla, who retires by rotation and being eligible offers himself for reappointment. Fourth, reappointment of the statutory auditor for a term of 5 years. The text of the resolutions along with explanatory statement is provided in the notice circulated to the members. I read out all the agenda items, sir. Upon conclusion of this meeting, Mr. D. Balram Krishna, the scrutinizer appointed by the company, would compile the details of the votes and submit his report. The result of the voting on each resolution would then be displayed on the website of the company within the next 3 days. Over to you, Chairman. Thank you, Madhur. We will be glad to answer any questions which any registered speaker may like to ask on the financial statements or other matters.
We will take the queries of the shareholders one by one and answers will be provided to all the queries at the end. I request Mr. Madhur to moderate the session. Thank you, sir. Before we go live with the question and answer session, here are some points to note for everyone's convenience. The names of the pre-registered speakers will be announced one by one. The CDSL host will enable the audio and video of the speaker. Members are requested to mention their name, folio number, and location before posting any query. We will now begin the question and answer session now. Shareholder. Now I request the host to enable audio and video of Mr. Praful Chavda, first speaker of the day. हेलो हेलो Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है Please सर? go ahead. Yes, sir. Please go ahead. थैंक यू सर. सर, चेयरमैन सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेरा फोलियो नंबर है 120-135-000-107-177. सर, आपकी कंपनी का एचएम रिपोर्ट मुझे हार्ड कॉपी मिला. मैंने रिक्वेस्ट किया था तो कंपनी सेक्रेटरी 2 दिन में भिजाते बोल के बोले, पर बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिला. जब मैंने पूछा गया कि ये इतना टाइम क्यों लगा एचएम रिपोर्ट में, तो बोले प्रिंटर चला गया था, प्रिंटर आउट ऑफ स्टेशन गया था, प्रिंटर नहीं था, प्रिंटर का प्रॉब्लम बताया. यानी कि अपने प्रिंटर को पैसे नहीं दे रहे क्या, या प्रिंटर से उधार में काम कराते हैं क्या? प्रिंटर नहीं है तो चेंज करो आप प्रिंटर. प्रिंटर आपका कोई भी काम लेट करते हैं तो कैसा चलेगा? इतनी बड़ी कंपनी रख के एक प्रिंटर के भरोसे पूरा प्रिंट का काम रुक जाता है, नहीं चलता सर. सर, देखा मैंने रजिस्टर ऑफिस चेंज, इसमें W.E.F, इसका मीनिंग तो सर कैसे पता चलता है? WEF बोले कि कोई भी मीनिंग्स निकाल सकते हैं. आप बताना चाहिए इसका मीनिंग्स क्या है, और पुरानी एड्रेस भी बताना चाहिए, ये एड्रेस से ये एड्रेस आया, तो ताकि पता चले कि एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, ओनली फ्लोर चेंज हुआ है, वो भी पता चलता. आपकी कंपनी में एक भी फैक्स नंबर नहीं है सर. फोन नंबर पे फैक्स आजकल अभी भी जरूरत पड़ती है और जरूर रहना चाहिए. सर, आपके एक ही बैंक है, आपका बिजनेस आपने बिजनेस बताया है, इन्वेस्टमेंट, हाइड्रो पावर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सीड, केमिकल, इतने सारे बिजनेस आप करते हैं, आपका एक ही बैंक है. कल के दिन एफडीएफसी बैंक भी बंद हो गया, प्रॉब्लम आ गया, कुछ घपला निकल गया, तो आपको तो पेमेंट नहीं मिलेगा. आप किसको पेमेंट करेंगे? एम्प्लॉयज को कैसा पेमेंट करेंगे? आपका रॉ मटेरियल खरीद देते हैं, उसको कैसे पेमेंट करेंगे? आपको कस्टमर पैसे देंगे और किस में डिपॉजिट करेंगे? तो ऐसा सर, इतनी बड़ी जो कंपनी बड़ी होती जा रही है, कम से कम 4-5 बैंक रखना चाहिए. नेशनल बैंक तो आपका एक भी नहीं है. ये जो बैंक है प्राइवेट बैंक, लिमिटेड बैंक है, और नेशनल बैंक तो नहीं बोल सकते. एसबीआई जो गवर्नमेंट की बैंक है, इसको आप लेना चाहिए, और नहीं लिए सो है. और सर अपना कंपनी ने अलग अलग क्यों नाम रखे? जब एनसीएल है तो आपने सनड्रॉप सीड, NCL ग्रीन हेल्ब्रेट, एस्टेट घाट का कत्या इंस्टीट्यूट. जब NCL के नीचे ही काम करते हैं, NCL का फ्लैग के नीचे काम करते हैं, तो कंपनी का नाम अलग अलग रखने से क्या मतलब है? और सर, मैंने ये भी देखा है कि आपकी कंपनी, ऐसा तो मैं पूरा अगस्त में वोटिंग किया हूँ, मेरा फैमिली में अगस्त वोटिंग किया है, और लास्ट ईयर से अपना बिजनेस बहुत कम हुआ है, वो तो आपने खुद ने बता दिया है. लास्ट ईयर भी 4 करोड़ 42 लाख रुपीस प्रॉफिट था, ये साल ओनली 1 करोड़ 60 लाख प्रॉफिट हुआ. इसके लिए तो आपके कंपनी के पास हर एक जॉब रहेगा है. हाइड्रो डिवीजन, केमिकल डिवीजन किस नाम से और कितने केमिकल बना रहे? केमिकल के बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहिए, कि बोले तो आजकल केमिकल के बिजनेस अच्छा चलता है, और बहुत सी केमिकल कंपनी बहुत आगे गई सर. तो केमिकल के बारे में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, कैसा है, बताना चाहिए. अपने कंपनी सेक्रेटरी भी चले गए, और सीओपो है ना, हाँ, CFO भी चले गए. दोनों न्यू अपॉइंटमेंट 11 सितंबर को हुआ. तो ऐसा क्यों कारण है कि दोनों को नया अपॉइंटमेंट लेना पड़ा? तो पुराने थे, उसका क्या हुआ, उसके बारे में बताएं. रिजाइन कर दिए या वो भी कंटिन्यू चालू है? सर, इन्वेस्टमेंट, कंपनी का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 35 करोड़ रुपीज है. सर, इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है? कंपनी डेट फ्री हो, कंपनी के पास पैसे है, कंपनी लोन पे लेती है और अपनी कंपनी नहीं चलाती है, और पैसा दूसरी जगह पे लगाती है, दूसरा बिजनेस खोल देते हैं.
छोटे छोटे बिजनेस 1 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख रुपए में बिजनेस करने को चले जाते। आज 50 लाख में कोई बिजनेस होता है क्या? आप करते हो, लॉस करते हो इसमें, तो बिजनेस लगाने का मकसद क्या है? 1 करोड़ 15 लाख रुपीज तो आप इंटरेस्ट भरते हो, फाइनेंस कॉस्ट इतना, फाइनेंस कॉस्ट 1 करोड़ 15 लाख रुपीज आप फाइनेंस कॉस्ट, लास्ट ईयर ओनली 36 लाख रुपीज फाइनेंस कॉस्ट था। अब बिजनेस बढ़ाते, बिजनेस सब्सिडरी कंपनी बनाते जा रहे, इसका मीनिंग क्या है? एक ही बेनिफिट है, एम्प्लॉय जाएगा, एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी। आप 4 कंपनी के डायरेक्टर को बोल के बोल सकते हैं, आपके पास 5 कंपनी चलाते हैं आप, वो बोल सकते हैं, वो आपका पर्सनल सीट ऊंचा हो जाएगा। 4 आदमी में बोलेंगे मैं 5-5 कंपनी चलाता हूँ, शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट? बोलिए अभी अभी आप 4 साल के बाद एक बार डिविडेंड दिए सो है, वो एक खुशी की बात है कि 1 रुपया भी मिल रहा है हम लोगों को। तो सर जब तक कंपनी लिस्टिंग नहीं होगी, आईपीओ नहीं लेके आएंगी, तब तक ऐसे चलता रहेगा। अभी हमको लेटर आता है, मेरे हाथ में लेटर, ऐसे लेटर आते हैं, ये लेटर आते हैं मेरे को कंटिन्यू, महीने में 10 लेटर आते होंगे। आपका शेयर बेच दो, एनसीएल के शेयर बेच दो, होल्डिंग के शेयर बेच दो। खरीदने वाले क्यों ऐसा लेटर देते? आपको भी आते होंगे, तो आप भी हमको इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि अपनी कंपनी क्या कर रही है, कैसा आगे बढ़ रही है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। सेल नंबर पे, फोन नंबर पे, कंपनी का जो फोन है इस पे बात करेंगे तो बोलते कंपनी सेक्रेटरी आज नहीं आया, बाद में आएगा, आज उधर हो गया उधर गया। मैंने कुछ मेल करने के बाद भी रिप्लाई नहीं मिला, तो इंडिया का टॉप, इंडिया का टॉप में बोलूंगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या डायरेक्टर बोलूंगा, बिमल जी को मैंने बात किया और 24 आवर्स में रिप्लाई मिला। तब कंपनी सेक्रेटरी को एक छोटा सा रिप्लाई देने को 24 आवर्स के ज़्यादा टाइम लगता है। वो भी हमारे, हम जो इसके वेल विशर है, हम जिसको चाहते हैं, ऐसे गरोडिया जी जो हम तकरीबन 25 साल से पहचानते हैं, उसका पीआर अच्छा है कि हम उन्हें, हमको रिप्लाई देते हो और हम कुछ काम हमारा होता है कि ये रिप्लाई मिल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर का या किसी का भी रिप्लाई इमीडिएटली देना चाहिए, कुछ काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। आप चाहे तो रिलायंस को भी लेटर लिखे, इंफोसिस को लिखे, किसको भी बड़ी कंपनी को लिखे, इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपकी कंपनी छोटी है तो 4 दिन के बाद मिलेगा, ऐसा आप सोचते हैं क्या सर? सर इसके अलावा आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया, 6 करोड़ का किया है, 23 करोड़ का किया है। वो इन्वेस्टमेंट में कुछ भी बेनिफिट तो नहीं मिला है। करंट इन्वेस्टमेंट, एनसीएल के शेयर आपने बेच दिए सर, लास्ट ईयर 4 लाख 41 लाख रुपये, 3 लाख रुपीज, यानी कि आपने थोड़े शेयर बेचे सर इसमें। तो एनसीएल के शेयर बेचे क्यों आपने? आपने क्या वो एनसीएल इंस्टीट्यूट की कंपनी में ट्रस्ट कम है या कुछ आगे फ्यूचर अच्छा नहीं है कंपनी का? इसके बारे में भी बताएंगे सर। सर अदर एक्सप्रेशन तो देखे तो बहुत सारा एक्सप्रेशन इतना बढ़ गया है। ऑडिट फीस लास्ट ईयर 25,000 से 1 करोड़ 20, यानी कि 1 लाख रुपीस आपने ऑडिट फीस बढ़ा दिए है सो है। तो इसके बारे में एजीएन एक्सप्रेस लास्ट ईयर 43,000 था, ये साल लास्ट ईयर 1,31,000 एजीएम का खर्चा हो गया। एजीएम का खर्चा तो कम होना चाहिए। आजकल तो दलाल लोग खास तौर पे बोलते हैं, एजेंट लोग खास तौर पे बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग रखो, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग रखो, ऐसे एजेंट पैदा हो गए हैं, तो कम खर्चा आता होगा बोल के बोलते होंगे। तो इसके बारे में बताएंगे ज़्यादा खर्चा क्यों हुआ। प्रोफेशनल चार्ज भी कम हुआ है, तो प्रोफेशनल चार्ज में किस तरह से कम हुआ वो भी बताएंगे सर। इसके सिवा बहुत से सारे क्वेश्चन है, आगे के बहुत से शेयरहोल्डर मेरे बोलने वाले होंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, चाहे तो मैं 20-25 मिनट भी बोल सकता हूँ। पर कंपनी सेक्रेटरी, ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी का काम अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ और लाइफ में आगे भी फ्यूचर में अगेंस्ट में रहूंगा। धन्यवाद सर। Thank you, Mr. Thank Prasad. you. Now I request the host to enable audio and video of Mr. Kamal Kishore Jhawar, second speaker of the day. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ सर बोलिए। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? सर बोलिए सर, आवाज आ रहा है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, बोलिए। हाँ, वो चेयरमैन सर मधु साहब, हमारे चेयरमैन साहब, अभी जो प्रपोजल, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आज आप चेयरमैन बने और आपकी
कंपनी ने इतना लॉस होने के बाद 1 रुपया शेयर डिविडेंड दिया है। हम ख्वाब में नहीं सोचे कि एनसीएल और होल्डिंग में डिविडेंड कैसा मिलेगा, एक चमकदार होगा जो एनसीएल अल्टेक में नहीं मिला। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपका सेक्रेटरी डिपार्टमेंट वर्स्ट, और आपका जो खर्चा बढ़ रहा है दिन पे दिन। हम जैसा आपके एजेंट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को, हम हर एजेंट को बोलते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को, पर ये खर्चा कैसा बढ़ के आया, इसके बारे में बताओ आप। एजेंट भी अगर बोला आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस को, तो इतना खर्चा नहीं आना चाहिए। हम कहीं भी रहे तो प्लेस में आपकी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। एक कंपनी में विमल, जब से पहले हम 20-25 साल से पहचानते हैं विमल को, जब अच्छा बात करते थे, पर आज वो कंपनी में बोलते हैं मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर एक कंपनी में कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन नहीं, समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्टर सिटिंग फीस कैलकुलेट थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं। एक काम करो साहब, आप इधर इन्वेस्टमेंट करे, उधर इन्वेस्टमेंट करे, पूरा आप बाई बैक में, जैसा मेरे को भी लेटर दुनिया के आ रहे कि ये रेट हमारे को दे दो, ये रेट। आप 200 रुपए में शेयर लेके एक कंपनी हमेशा के लिए शेयर होल्डर के शेयर ले लो, आपकी कंपनी पूरा प्राइवेट बन जाती है, कोई शेयर होल्डर के पास शेयर नहीं रहना। 200 रुपए में बैक कर लो। हम इतना क्वेश्चन करने का भी जरूरत नहीं है। ऑडिटिंग फीस इतना बढ़ गया है साहब, हम ऑडिटिंग फीस देखते हैं, आपकी कोई कंपनी में इतना प्रॉफिट रहता है तो ऑडिटिंग फीस नहीं है। आकर एक क्या बात है आकर, जैसा हम एजेंट है, जैसा हम बोलते हैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस रखो, अब हम एजेंट को रहने को स्पेशल हमारे कुछ क्या देता, कुछ भी नहीं देते। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस काय के वास्ते रखते हैं भाई, हम कहीं भी प्लेस अनदर विलेज या सिटी में कहीं भी रहते मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और अनदर शेयर होल्डर को मीटिंग में मिलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। और उसके अलावा आपका जो खर्चा है, हम भी इतना जानते हैं, हम भी आई एम द बिजनेसमैन, इतना खर्चा नहीं आता, बैलेंस शीट का इतना खर्चा नहीं आता। हम भी दुकानदारी करते हैं, ये समझ में नहीं आता खर्चा कैसा बढ़ जाता कैसा नहीं, ये भी बात समझ में नहीं आता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सिटिंग फी, ट्रेवलिंग खर्चा, जब कंपनी में इतना बिजनेस है तो ट्रेवलिंग खर्चा कहीं को बढ़ रहा, व्हाट इज द मीनिंग, क्या खर्चा बढ़ रहा, कौन सा शेयर होल्डर को कौन सा रिटर्न दिए आप, इतना खर्चा बढ़ रहा। अदर एक्सपेंसेस, लीगल खर्चा कब होता है कि कंपनी में बिजनेस बढ़ गया भाई, प्रॉफिट आ गया, अरे हो भाई लीगल में एक कंपनी से वो कंपनी में खर्चा कितना है, कुछ धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, काय का खर्चा बढ़ गया कंपनी में आपके। आप एक कंपनी साहब 10 साल के नीचे पहले मधु साहब, वो विमल थे जब हमारे को बहुत अच्छा देखते थे हर चीज। अब ये कौन आ रहा कौन जा रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। बड़े बड़े बातें करते, आपको बेनिफिट दे दिए, आपको बोनस दे दिए, क्या दिए। हम 30 साल से शेयर होल्डर है कंपनी में, आज 30 साल के बाद कोई कंपनी में इतना पैसा रहे तो किधर का किधर आदमी चले जाता। ये मार्केट बिग बुल है, भी फालतू शेयर भी अच्छा पिकअप हमको मिला है, अच्छा रिटर्न मिला है, 100 गुना प्रॉफिट मिला, 10 गुना प्रॉफिट मिला। आपकी कंपनी में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारे अन्य साथी सुरेश से बात करो। हेलो आदरणीय चेयरमैन सर, उपस्थित सभी डायरेक्टर और शेयर होल्डर साथियों, मेरा नाम सुरेश चंद जैन है। सर हरदम मेरे पास फिजिकल शेयर है, और मैं कंपनी के अंदर आया था, मेरे पास फिजिकल शेयर है, कैसा करना क्या करना कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, जिसका से मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा। कमल किशोर जी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सर। और आपका एक्सपेंसेस ये वो देख के हमारे को इतना दुख होता है कि हम कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते, और हमारे को मुंह बंद करने के लिए आप 1 रुपया डिविडेंड दे रहे, क्या मतलब सर 1 रुपए के अंदर। और आप लोग का सीटिंग फीस ये वो दुनिया की चीजें ले लेते, जिसका से सर मैं कमल किशोर और चौड़ा का मैं अनुमोदन करते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। पहले अच्छे से ऐसा बोलो। और क्योंकि इसके पहले विमल साहब और दूसरे जने मधु साहब हमें अच्छी तरह से बातचीत करते थे, कंपनी में बिठाते थे। अब विमल बोलता मैं छोड़ दियो, इसका मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। विमल सर बोलते, क्योंकि हमारे 25-30 साल से रिलेशन होने के कारण मेरे मुंह से विमल निकल गया। मैं विमल जी से माफी चाहता हूँ, मैं विमल जी से माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैं विमल कह दिया था इसके लिए। और सर हम कभी आए तो हमारे आचार विचार सुनने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। आपने जो टाइम दिया मुझे और कमल किशोर जी को, और उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और हो सके तो आप हमारे सेना ले लो और 200 रुपये, और सर हमारे शेरा ले लो, हमको गुड बाई है कंपनी से, 200 रुपए में शेरा ले लो। जितने भी लोग का शेयर होल्डर है, बहुत से कंपनी वाले शेरा ले ले रहे, आप शेयर होल्डर लेके मीटिंग पूरा हमेशा के लिए बैन कर दो, पूरा होल्डिंग आपके पास रख लो। थैंक यू। आज से 100 साल की शुभकामनाएं देता हूँ आपको। Now I request the host to enable audio and video of Mr. Ramesh Mangluri, third speaker of the day. Not available, sir. Okay, now I request the host to enable audio and video of
Mr. Bharat Shah, fourth speaker of the day. Yeah, today's Mr. Chairman, Mr. Ashwin Datla, sir, our founder, Mr. Madhu, sir, Managing Director. Sir, I have gone through the balance sheet and through the chairman's speech today. Again, it is a great, sir. You have given maiden dividend after demerger in NCL Holding Limited, and we hope this kind of dividend will continue in coming years. As you mentioned in the chairman's speech, our main core company will be NCL Green, where we are going to develop more and more. We are going for construction for mega flat project. What is the project size of these flats? We want to know, and how much capital expenditure will be there, and that is the main, because we are seeing that other subsidiaries, one of the subsidiaries are going to merge with the holding company, and Kakatiya Industries, you are going for demerger of chemical plant, and so we hope that at least you concentrate on single sector, which is a current sector is construction sector, and residential construction and all property sector. So we hope that this company will again in coming years will grow and will be listed in next 2-3 years and create value for shareholders. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now I request the host to enable audio and video of Mr. Yogesh Doshi, fifth speaker of the day. Not available. Okay. Darshana Yogesh Joshi or Suprati. That name. Sorry, ma'am. Darshana Yogesh Joshi or Yogesh Joshi. No, ma'am, not available. So he was the last speaker of the day. We are done with our questions. Gentlemen, thank you for your questions, and I would like to kind of appreciate the feedback that you have given. Some of them was hard feedback, and I will try to kind of I filled in 2 pages of questions. I'm not sure I'll be able to address all of them individually. However, I would like to kind of make a statement that will address most of the questions. Number one, I'd like to kind of reiterate why this company was formed. The reason why this company was formed was because Buildtech had a lot of non-building material businesses which were non-core to the Buildtech operations. That is why all those businesses were kind of spun off, and this company was formed to kind of so that the Buildtech operations can take care of, can be more focused. Now, what we have been doing is we have been trying to consolidate these various assets and operations into a more streamlined operations so we can kind of get it into play. Now, there were questions as to why were these companies formed, when were they formed, what are the names? I appreciate all that. But please remember that these companies were formed before the demerger. So what the management is now trying to do is it is trying to kind of consolidate and streamline the processes. Unfortunately, this is taking a little longer than what was anticipated. But like we said, number one, the primary focus is to kind of get the hydro project up and running. Now, one of the questions was, why did we sell the NCL shares? The proceeds of the sale of NCL shares was to kind of fund the project. Now, this does not in any way reflect our stand on the valuation of the NCL shares. We prioritize the project becoming operational, and it has no reflection on the share value of NCL Industries. I'd like to kind of make that clear. Number two, just a continuation also on that is we have gone to the registrar, to the RD to kind of get the merger of some of the subsidiaries into the parent.
Unfortunately, the RD has kind of come back to us and said that we will need to go through the NCL route. So that is the process that we are going to adopt this year. I understand that there are a lot of questions on some of the questions and queries that were raised to the company secretary and the CFO and the overall management, and we were not in a position to kind of respond to you in a timely manner. And for that, I do apologize. What I would also like to do at this time is kind of make an open offer to kind of please send an email request to the company secretary and the CFO detailing all the queries or issues that you had. I assure you that we will look into them promptly and we will get back to you. There were also some questions on the expenses of the company, including the auditor fees and all that. To the best of our knowledge, our expenses are reasonable and within normal operational procedures. Please understand that we have 4 different companies that we have inherited that we need to kind of operate. Now, naturally, there will be some statutory costs. But that being said, we take your thing. We will do a comprehensive assessment of our expenditures to see where we can reduce it. Now, part of the year expenses, sir. This year is 2 year expenses. That is the reason of last year, all these appointments and directors, everybody is part of the year only. I think the CFO also just updated me. If you look at prior year and this year expenditures, there is an abnormal increase. The reason for the increase is because the prior year is only for part year expenditures. But my request, what we will do is on the expenditures, especially for the shareholders who have raised it, we will revert with a detailed email on the expenditures. And in case there are some things which we find to be abnormally high, we will take efforts to kind of reduce that. Again, our focus next year would be primarily on 2 things. Number 1 would be making the hydro unit project operational. We are expecting the project to become ready by end of October and start revenue generation from February onwards. So that is our primary goal right now. Also, in terms of the apartments, Mr. Baracha asked some questions about the apartment. Can you give some details as to what is the value content of that? Mr. Baracha, we will send you an email after this with the details of the apartments, the costing for the apartments and when we are expecting to do that. Yeah. I think we have to a very large extent answered the questions. Mr. Madhu would also like to say something. You have been, some of you have been shareholders of this company, of NCL Buildtech for a long time. The business conditions have been changing from for a period of time. So we originally we were in building materials. There was a stage when we thought building materials, continuing in building materials would be risky. So we thought of investing in other businesses. That is how NCL Buildtech got into various other businesses. It acquired some lands in the name of Green Habitats. It has decided to invest in a hydropower project. It has decided to invest in a seed company. And Eastern Ghats was created specifically to explore the hydropower projects in Orissa. But over a period of time, we found that working in Orissa was not very good. So we have stopped, the Eastern Ghats stopped functioning quite some time back. It is now only a formality that we need to close the company. Suncrop Sciences, the seed company, we had no experience in seed company, and we realized that this is not our cup of tea. So we have decided to take in a new partner. So we are looking for a new partner
to sort of take this company, because we don't have the capability to run the seed company. Hydropower, yes, the group has exposure, already has 3 hydropower units, and this will be the 4th unit, and it will be a very good unit, though it took a lot of time for getting this operational. So we are at the end of the tunnel. In sometime in January, in a month's time, we are going to have this unit operational. Now, shareholder interest has been always has been very close to our heart. Demerger of all these activities from NCL Buildtech was only done to improve the shareholder value in NCL Buildtech. So that is how all of us got these shares of holding company. And holding company, we don't have plans to make this public. We are not going to go for public issue. And if some shareholders, they want to sell their shares, promoters will be happy to buy those shares. And this will be NCL group. The core strength is building materials, and we are also into hydropower and real estate activity. The holdings will have once the Green Habitats is merged into holding company, that will be a real estate activity and construction activity. That will be the main activity of the holding company. So we are definitely, the shareholder interest is always important to us, and we will take care of that. So these things, this is a sort of new setup for this to stabilize, and now we'll have a separate team for focusing on the activities of holdings, and it will take few years for this company to stabilize and earn decent profits. So you, as shareholders, you will have to bear with the company for a few years. Thank you. We have answered all the questions. With that, we finished question and answer session. I will hand over back to the chairman. I want to thank all the members for the queries and the views. If you have any further queries or queries from the shareholders attending the meeting who have not registered as speakers, can be sent through email to the secretarial department, and it will be answered appropriately. On behalf of the Board of Directors of NCL Holdings, I convey our sincere thanks to all the members for attending and participating in this meeting. I hereby declare the proceedings as closed. As a vote of thanks, I would like to thank everyone over here for taking out time for attending this 4th AGM and for the smooth conclusion of this meeting. Thank you very much. This meeting is concluded, sir? Yes. Yes, Sir. Can we stop recording and end the session? Yes. Yes. yes, please. Yeah. Praveen? Yes, sir. Thank you, sir.